बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु असां CPC जो ऑर्डर नंबर 39 पढ़ंदासीं त टेम्पररी इंजेक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या है, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि टेम्पररी इंजेक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या है। इसमें ये याद रखने की चीज़ है कि आप इस चैप्टर्स को कोशिश करें, बार बार रीड करें, बार बार पढ़ें, क्योंकि ये भी लॉ गेट में जो है बताया गया है, ये आएगा। और 3-4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से गेट में 1-2 तो ज़रूर आता है। केसेस इन विच टेम्पररी इंजेक्शन में बी ग्रांट, कहिड़ा केसेस आहिनि जंहिंमें असां टेम्पररी इंजेक्शन्स ग्रांट थींदी आहे, ऐं कहिड़ा केसेस आहिनि जंहिंमें टेम्पररी इंजेक्शन्स। सबसे पहले, वेयर इन एनी सूट इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग अ वेस्टेड or damaged or alienated by any party to the suit are wrongfully sold in executions of a decree. उसके बाद, that the defendant threats intend to remove or dispose of his property with a view to defraud his clear debtors. The court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting and damaging, alienation, sale, removal or dispositions of the property, as the court thinks fit, unless the disposal of the suit or until further order. उसके बाद, injunction to restrain repetition continuances of breach in any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract, other injury of any kind, whether the compensation is claimed in the suit or not. The plaintiff may at any time after the commencement of the suit, either before or after judgment, apply to the court for the temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract. Injury, the complaint of any breach of contract, injury of a like a kind arising out of same contract relating to the same property or right. ये इसकी कंडीशंस है। सबसे पहले 2 मरतबा द कोर्ट में ये याद रखना चाहिए कि जो मैं कभी कभी गेट में पूछ सकते हैं कि मैं आता है। The court may by order grant such injunction on such terms as to the durations of injunction, keeping in account giving the security or otherwise as the court thinks for. उसके बाद, in case of disobedience of breach of any such terms, the court grant injunction may order the property of the person guilty of such a disobedience or breach to be attached, and may also be order such a person to be detained for a term not exceeding the 6th month, unless in the meaning the court direct his release. No attachment under this rule shall remain in force for more than 1 year, at the end of which time, if the disobedience or breach continue, the property attached may be sold out of proceeds. The court may award such a compensation as it thinks fit, and shall pay the balance of any in the पार्टी। ये इंटरम इंजेक्शन याद रखना चाहिए। तो 15 डेज जो है ना बताया गया है। इंटरम इंजेक्शन पास्ट अंडर रूल 1 or 2 इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट शल नॉट, जेकॾहिं डिफेंडेंट एब्सेंट रहता है तो उसको 15 डेज़ का पीरियड कोर्ट की तरफ से दिया जाता है इंटरम इंजेक्शन में। Provided that such injunction may be extended for failure of service on the defendant when such a failure is not attributed to the plaintiff, when the defendant seeks terms for defense application for injunction. The order of injunction made under Rule OA or after hearing the parties after notice defense shall cease to have effect on the expirations of 6 months, unless extended by the court of hearing parties again
and for reason to be recorded for such extension, provide that the report of such extension shall be submitted to the हाई कोर्ट। उसके बाद ये जो गेट में पूछा गया है, बिफोर ग्रांटिंग इंजेक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी द कोर्ट शल इन ऑल केसेस शल अंडरलाइन करें बिफोर ग्रांटिंग एन इंजेक्शन डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी को अंडरलाइन करे और को द कोर्ट से वेंदे आखिरी जो एंड अप है अपोजिट पार्टी आया है लॉ गेट में। प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट एट द स्टिपुलेटेड टाइम of debate in respect of which the goods were pledged with any bank where the injection is to be granted against the government or government servant such or any authority board of cooperation set up as to government in any case an act of any person from the demolitions of any premises the court where it appears that the object of granting injunction would be defeated by the delay dispensed with such a notice. Provided further that the period of notice under this rule to government or government servant as such an statutory authority corporation set up by government shall not less than 2 days not exceed। इसको भी अंडरलाइन करें, कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आर्डर फॉर इंजेक्शन में भी डिस्चार्ज वेरी सेटिस्फाइड, ये तीन अल्फाज आपको याद रखना चाहिए। जब इंजेक्शन का आर्डर होता है क्या होगा, डिस्चार्ज वेरी सेटिस्फाइड। एनी आर्डर फॉर इंजेक्शन में भी डिस्चार्ज वेरी सेटिस्फाइड बाय कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी। ये एनी पार्टी को अंडरलाइन करें, ये पूछा गया है, 2 मरतबा पहले भी गेट में आया है। एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच आर्डर। उसके बाद injection to cease to be enforced after certain period, injection granted by court in a suit which cease to question the validity or legal effect of any order made proceeding taken or act done by any authority person which has been taken or done or purport to have been taken done under any law which specified in part number 1st schedule to the constitution or related to is connected with assessment collections of public revenues shall cease to have effect on the expiration period of 6 months following the day on which it is made unless the case is finally decided the injection is discharged set aside by court. This rule public revenue include the dues of any bank owned by federal government, of any corporation undertaken owned or controlled by federal government or provincial government। और उसके बाद जो इंजेक्शन cooperation binding on its officers, an injection directed cooperation is binding not only on the cooperation cell but also on all members officers of cooperation whose personal action seeks to restrain। उसके बाद इंटरलोकेटरी आर्डर्स क्या है, पावर टू आर्डर इन टर्म्स से the court may on the application of any party to a suit order the sale by any person named in such order in such a manner and such a terms as it thinks fit of any movable property being the subject matter of such a suit or attached before judgment such a suit which is subject to speedy and neutral decay which for any other just and sufficient cause may be sold at once। उसके बाद डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, ये याद रखना चाहिए। और ये देखें डिपॉजिट ऑफ मनी कैसे डिपॉजिट होती हैं, वेयर द सब्जेक्ट मैटर मनी और सम अदर थिंग्स केपेबल ऑफ डिलीवरी पर देयर एडमिट दैट ही होल्ड दिस सच अ मनी अदर थिंग्स एज अ ट्रस्टी फॉर अनदर पर्सन दैट बिलोंग्स टू अनदर पार्टी सेम टू बी डिपॉजिट कोड डिलीवर्ड। और ये आर्डर था, ये आर्डर भी आपको इंजेक्शन इज इन ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू डैश ऑफ समथिंग। इंजेक्शन में बोथ होते हैं, डू होते हैं, डोंट भी होते हैं। द कोर्ट में ग्रांट टेम्पररी इंजेक्शन अंडर ऑर्डर डैश कोर्ट कहिड़े मदद सां टेम्पररी इंजेक्शन कंदी आहे, ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1, ये याद रखना चाहिए आपको।